Hello students. Today our topic is microorganism, friend and foe. So very first of all we will learn what is microorganism. Microorganism has two words, that is micro and organism. Micro means which are very minute in size, right? So what will be the define of microorganism? The living organism which cannot be seen with our naked eye. We can't see it our naked eye, so we have to observe these microorganisms under the microscopes are called microorganisms. Microorganisms are also called microbes. Microorganisms are of two types, unicellular and multicellular. Okay. सो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स वन और मल्टी मीन्स मोर देन वन. तो यूनिसेलुलर क्या होगा? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होंगे, और जो मल्टी सेलुलर हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने होंगे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर. राइट. अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं. तो द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ microorganism, what we call that? Microbiology, right? And the scientists who study the microorganism, what we call them? Microbiologist. अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि कहाँ से आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? क्योंकि बेटा ये तो हमें अपनी नेक्ड आई से तो दिखाई नहीं देते हैं, हमें इनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप. और आपको पता ही है माइक्रोस्कोप ऐसा तो नहीं है कि सब अपने हैंड में लेके घूमेंगे. तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो थे ल्यूवेनहॉक. ठीक है. इन 1674 he observed the living cell for the first time with the help of his microscope. Clear?